Okay, reporting and analyzing receivables and investments. So the first point is to talk about the credit sale. So in a credit sale, we have two or three types of discussion here. The first one is a credit sale, then bad debts, then allowance for doubtful accounts. So record simple recording of credit sale is credit account receivable with a value of 950 to sales. So if you remember, this is a simple entry 950. So out of 950, if I would say only $720 is received, the total value जो आपने यहाँ पे की है, तो अब इसको आप कहते हैं to record the credit sale. So the collection of credit sale against the credit sales, we have received 750 only. So account receivable would be credited 750. तो एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्योंकि कंपनीज मल्टीपल कस्टमर से डील कर रही होती है, तो हर कस्टमर की सेपरेट रिकॉर्डिंग और सेपरेट नेम के साथ उनके अकाउंट रिसीवेबल के अंदर एंट्रीज होती है। जैसे आपने देखा कि जो आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं वो भी हर किसी का सेपरेट रिकॉर्डिंग इसकी हो रही होती है बैंक अकाउंट्स में। इसी तरह कंपनीज भी अपने कस्टमर के सेपरेट अकाउंट्स वगैरह डील करती है। नाउ यू कैन सी दैट approximately 200 value of your receivables are bad debts। यहाँ पे अगर आप देखें कितने बैड डेट हैं यहाँ पे जो कंपनी ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए, वो आप लोग देख सकते हैं। मुझे कैन यू कंफर्म द वैल्यू? 200। 200 की वैल्यू ऐसी है कि जो कंपनी के बैड डेट, तो कंपनी इसको लिखेगी बैड डेट एक्सपेंस कंपनी के बैड डेट एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पे 200। और इसी तरह कंपनी ने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितना था 950, इसमें से क्रेडिट 750, और रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल जो है वो भी आपका क्रेडिट होगा अगेंस्ट द एक्सपेंस, दैट इज 200। so this is a simple adjustment of a bad debt. Later on you can see that some point of time you have recorded it as a bad debt. You feel that the company will not be able to collect that expense, तो हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड ऑफ द टाइम। जब कस्टमर ने हमसे कमिटमेंट की थी आफ्टर 3 month 4 month और 5 month, the customer will give 950 value, but the customer is going to give us only 750. So then we realize that the 200 is our uncollectible amount, so we record it as a bad debt। अनकलेक्टिबल है तो ये हमारा बैड डेट हो गया, हमने 200 लिख दिया। लेकिन हुआ ये कि आफ्टर 1 or 2 months, because of your continuous effort to the customer, or with your good behavior or your positive uh, you can say that activity or effort, the customer is agree to pay you 200. Now this is a challenging question to you. If the customer is agree to pay you your bad debt a value of 200, what will be the transaction? Anyone from the class? After 1 or 2 months, now how you will record it? Cash to bad debt. जी Sir, cash to bad debt. ओके, एक ने मुझे बता दिया कि कैश डेबिट कर दें। कैश आप डेबिट कर देते हैं 200, और फिर और इसके साथ आप अपने जो बैड डेट आपने एक्सपेंस लिखा हुआ था, बैड डेट को आप क्रेडिट कर दें दोबारा 200 से। यू आर 50% राइट। ओके, बैड डेट अब आपके एक्सपेंस नहीं होगा, आप एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। जो लेजर का एक्सपेंस का काउंट होगा बैड डेट का, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा बिफोर पोस्टिंग इट इनटू द इनकम स्टेटमेंट। वो ये खुद ही जो है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन देखें, डू रिमेंबर इट, दीज बैड डेट्स आर नॉट अगेंस्ट कैश, these bad debts are against credit sales. It means that these bad debts are already recorded against
अकाउंट रिसीवेबल किसके अगेंस्ट पहले हमने लिखे हुए हैं? कैश और अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल। Account receivable. अकाउंट रिसीवेबल, डू रिमेंबर इट, देयर इज अ फ्लो। उस फ्लो को हम नहीं तोड़ सकते। लाइक ओके, जरा मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं। Like if I write sales, then sales will go to receivable, then receivable will go to cash. Now remember, this is the process. Am I right? So in that way, we would not be able to write directly that bad debts into the cash. What we need to do, first of all, we will reverse that entry. ये जो entry मेरे पास है, we will reverse it because now the customer is agree. If the customer is agree, earlier we closed this. हमने इसको close कर दिया था ना, like it's cross. Now we will re construct that entry. अब इसको हमने क्या करना है, rebuild करना है. If we are going to regenerate that transaction again, तो जो हमने closing की थी उसको open करना है. Now how we will open it? Just reverse it. If we will reverse that entry, it means कि वो जो effect हमने expenses में और account receivable में add कर दिया था, हम उसको reverse कर देंगे. Reverse का क्या मतलब होता है? Like regeneration. Are you getting me? Yes, sir. Now what we will write? Account receivable to bad debt. Very good. Account receivable to bad debt. Now this is a reverse entry of 200. इसका मतलब है कि हमने वो जो क्लोजिंग का इफेक्ट दिया था उसको हमने दोबारा से रीएडजस्ट कर दिए. Now it's account receivable to bad debt. Now we have collected it. Now tell me, what should be the entry? Cash to receivable. Account receivable. Cash to receivable. Now the remaining 200 receivables earlier considered as a bad debt received. अब हमने क्या किया, उसको रिसीव कर लिया. So this is the flow. Do remember it. In case of simple transaction, cash, then if it's a bad debt, we will record it like this. Now, if later on we are in a procedure of recovering it, then we will follow these steps. This one. These two entries will come, and then earlier you can see that the earlier 750 was in a cash. Now remaining 200 is again in a cash. Now the total adjustment, you can see that it's against 950. We have collected it even after adding it into the bad debt. Later on we have received it. Any question here, please? No, sir. किसी का कोई क्वेश्चन हो? Okay, in a same way, the next is how we will deal with the credit card. If there is a credit card entry, as a company, you know that if you have a credit card, you can go to any retail shop, you will give the card or you can buy anything. But on a company end, let's suppose I'm going to sell something as a customer to the customers as a company. So I would have some accounts receivable, like as a retail outlet or even as a company international भी आप transactions कर रहे होते हैं. You can buy anything from the Amazon and all online facilities provided by the companies. Let's suppose you have bought something with the value of 1,000. So against that 1,000, so what should be the sale of the company? Company की sale क्या होगी? 1,000. The company's sales are 1,000. This is a simple understanding. Now remember, there are two things. The first is if you got some facility from the company, from the bank, वो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपने देखा होगा, वेंडर मशीन पड़ी हुई है, आप कार्ड अपना प्रेजेंट करते हैं, वो कार्ड जो है वो कंपनी अपना कार्ड स्वैप करती है डायरेक्टली.
कंपनी के अकाउंट में अमाउंट चली जाती है। अगर तो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट जो है वो कंपनी के अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट जाएगी। Okay. Now this is the sale. At the time of receiving a cash from the bank, क्योंकि अल्टीमेटली वो कार्ड आपका स्वैप होगा और वो बैंक अकाउंट में जाएगा और वो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है। लाइक इफ आई हैव HPL अकाउंट, HPL क्रेडिट कार्ड, और वेंडर के पास जो है वो UBL की मशीन पड़ी हुई है, तो somehow the UBL company will charge certain fee to claim that amount from another bank. वो HBL से क्लेम करेगी ना मेरी अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड की है, तो उसके लिए सर्टेन फी चार्ज होती है। तो यूजली आउट ऑफ द 1000 द वेंडर हैज टू पे सर्टेन फी टू द बैंक। तो बैंक फिर उसको 1000 का क्लेम करेगा। तो यहाँ पे दो तरह की फैसिलिटी होती है। इन अ सम केस आफ्टर चार्जिंग अ क्रेडिट कार्ड द अमाउंट विल डायरेक्टली गो टू योर अकाउंट। In second case, after the charging, your bank, like vendor's bank, will start preparing claiming to another bank. जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उससे क्लेम का एक प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसकी फी चार्ज होती है बैंक टू बैंक। तो ये एक बैंकिंग प्रोसीजर्स आते हैं। तो बिकॉज ऑफ द सर्टेन फी, what I will receive after all, I will receive as a vendor, probably I will receive 990, and मेरी सेल कितनी थी? Sale was 1000, but I'm just going to receive 990 because of 10 as a credit card fee. तो क्रेडिट कार्ड फी मेरा एक्सपेंस होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड फी जो है वो अगेंस्ट अ सर्टेन ट्रांजैक्शन जो कंपनी चार्ज करेगी। तो अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपकी पेमेंट है तो कंपनी की सेल 1000 होगी, बट अगेन 990 और विद लिमिटेड अमाउंट विल बी चार्ज। तो कुछ एंट्रीज है वो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट ऐसे आपके पास हो। इन सम केसेस ये वो एंट्री है जिसमें डायरेक्टली आप जैसे ही कार्ड को स्वैप करेंगे आपकी फी कट जाएगी और आपको 990 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट इन केस फर्स्ट, अगर ये एंट्री आपकी इस तरह जैसे वो स्टार्ट की ऊपर मैंने आपको बताई थी, लाइक द अमाउंट विल नॉट गो डायरेक्टली इनटू द वेंडर्स अकाउंट। पहले वो बैंक के पास जाएगी, बैंक उसको क्लेम करेगा। क्रेडिट कार्ड जैसे ही स्वैप हो जाएगा उसको क्लेम के लिए जाएगा। Like how you will record it, like you will record account receivable 990, credit card fee 10 rupees, and the total sale 1000. Now later on, when the bank will confirm, you will get your cash of 990 against account receivable of 990. After the confirmation, you will get your money 990. In case if the money is directly going into your account, the transaction would be this one. But in case if there are two steps, the first, the amount will be charged and later on transferred to your account. So it's a direct transaction. This is an indirect transaction. ये आपके पास at the time of credit card charge and bank claim will start. This is a part of transfer of money. Now tell me, in that case of credit sale, what would be the bad debts? This is the last question in class. In this credit card transaction, I'm writing it. This is our credit card transaction. It's credit sale because uh, the vendor or retailer will not receive cash at the time of sale, but later on, with the help of bank, you will get your money back. Okay. So what would be the criteria of bad debt in that case? Anyone from the class? Sir, Sir, account जो receivable fee
If customer is not going to pay you, then how you will record your bad debt in case of credit card transaction? Yes. So think and give me the answer.